सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे गिटलैब पे हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, राइट। हाउ वी कैन क्रिएट अ गिटलैब अकाउंट, राइट। एंड पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिपोजिटरी क्यों रिक्वायर्ड है, रिपोजिटरी की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है। अगर रिपोजिटरी नहीं है तो उससे क्या इश्यूज होते हैं, राइट। सो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था, एंड इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट गिटलैब अकाउंट, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि हम गिटलैब अकाउंट को कैसे VS कोड से कनेक्ट कर सकते हैं। देन इवेंचुअली वी विल सी कि हम VS कोड के थ्रू हम अपने सेल्सफोर्स कोड को कैसे पुश कर सकते हैं गिटलैब रिपोजिटरी में। सो टुडे टॉपिक इज हाउ वी कैन सेट अप आवर गिटलैब अकाउंट। सो सिंपल है, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं एंड टाइप गिटलैब। मैंने पहले से टाइप कर रखा है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। सो लेट्स क्लिक ऑन गिटलैब अकाउंट लॉग इन, एंड जो आपको पहला सर्च में मिल रहा है, राइट। So we can see that. So it is verifying, and then it will redirect to its sign in page. सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन इन पेज पे है, और अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पे सिंपली यूजर नेम और ईमेल डाल के एंड पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्टर नाउ का यहाँ पे बटन है, राइट। सो सिंपल यहाँ पे रजिस्टर नाउ को पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना इंफॉर्मेशन अमित कुमार, राइट, एंड वाट एवर यूजर नेम यू वांट टू कीप। सो मैंने एक ऑलरेडी एक बना रखा है अपने यूजर नेम। So for to give in this video I can use I'll have to use different username, मुझे दूसरा यूजर नेम यूज करना होगा, राइट। सो लेट्स ट्राई समथिंग, अमित अमसू 1089, राइट, एंड इट्स showing यूजर नेम इज अवेलेबल, राइट। नाउ ईमेल आईडी, राइट। सो मेरा पर्सनल ईमेल आईडी मैं ऑलरेडी एक यूज कर चुका हूँ, सो लेट मी ट्राई अनदर ईमेल आईडी, राइट। एंड पासवर्ड आप जो भी, अगर जो भी यहाँ पे सजेशंस है, जो भी यहाँ पे इसके मस्ट बी बिटवीन 8 to 128 कैरेक्टर्स, कैनॉट यूज कॉमन फ्रेज एंड कैनॉट इंक्लूड योर नेम, यूजर नेम और ईमेल। सो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अगर आपने यूजर नेम में जो भी वर्ड्स रखे हैं तो वो आपको एज ए पासवर्ड में यूज नहीं करना। जैसे मैंने अमित रखा है तो यू कैन नॉट यूज अमित इन द पासवर्ड, अमसू रखा है तो यू कैन नॉट यूज अमसू इन द पासवर्ड, right? So you can keep different words, right? So I am typing different words. So here we can continue. Either way, there is option of single sign-on as well, right? Using your Gmail account, Google account, GitHub, Bitbucket, Salesforce. You can sign in with these platforms as well. But I am signing with my inputting the manual information, right? Using my email ID. So we can also create that. So I am clicking on continue. So once I click on the continue, it will send a verification code email to my email address. So जो भी आप email address आप डालोगे, आप पे एक verification code जाएगी. So let me check my email and put the verification code, right? So let me check if any verification code come. Okay, let me check. Yeah, so I have received on my email. So it's for right. So verify email address. We can click on verify email address, and we can see that verification successful. So we are able to log in the GitLab. We have registered. Now it is asking which role you are looking. So which role means not looking, means which role you are into. किस रोल पे अभी आप काम कर रहे थे, यू कैन सेलेक्ट एनी वन। मैं ये मेरा रोल कुछ भी है, लेकिन मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर डालो, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक डेवलपर पर्सपेक्टिव से ही बनाने जा रहा हूँ। So let me select Salesforce software developer, sorry, and I am signing up GitLab because I want to store my code. This is the important feature, right? And would you like to create new project, join a project? We can leave this for now. These are optional. And who will be using GitLab? Just me. If अगर आप कोई टीम के लिए बना रहे, कंपनी के लिए बना रहे, you can also use select this option and then continue.
So it is saying, oh, okay, it's mandatory to, would you like to what would you like to do? Okay, create a new project. Okay, so basically we will create a new project. It's a kind of repository. For example, अगर आप जब आप GitLab पे आ रहे हैं, तो आप अपने कोड के स्टोर करेंगे तो किसी प्रोजेक्ट के अंदर ही करेंगे, राइट? सो वाट एवर प्रोजेक्ट, विच एवर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग, राइट, you can use that project, right? Continue. Okay, so now it is asking create the project. So it is asking for group, and then under that group we are creating a project. So since I'm into Salesforce, so I'm making it like, for example, Salesforce Agent Force. आजकल एजेंट फोर्स बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, राइट? सो एवरीवन इज सेइंग अबाउट एजेंट फोर्स, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एजेंट फोर्स एआई, राइट? सो लेट्स सपोज कि आई एम वर्किंग एन ऑन a agent force project, right? And here we can select a template as well. Right, there are lots of template I can, but we can keep it. I think we can keep it. So it will create a blank project. So here वहां पे प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक इंपोर्ट का भी ऑप्शन था. आई आई मिस दैट थिंग. सो यू कैन इंपोर्ट द प्रोजेक्ट फ्रॉम other repository as well. There are also lots of options right over there, right? So here if you can see that the project has been created. सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम प्रोजेक्ट को, सॉरी, गिटलैब अकाउंट को सेटअप हमने किया, रजिस्टर किया गिटलैब अकाउंट पे, एंड कैसे हमने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया. सो इट्स अ काइंड ऑफ रिपोजिटरी itself. Salesforce Agentforce means it's a project. And here how we can push the code we will see in upcoming videos, upcoming sessions we will see, right? So इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू एवरीवन.